Uh, I'm going to start the meeting now. The What a wonderful day today. What a wonderful speaker we have. What a wonderful participants, all from cultural city Calcutta. And what a wonderful day starting with Monday. So please be ready with your questions. We will not be taking much time. And as we have already done the introduction and welcome yesterday to the speaker, audience is the same, speaker is the same. So we are skipping. State Bay, I will be requesting Group Captain Ashwini Kumar Bhaku to take on. But before that, I have two small announcements. One is, as I just said you earlier, I will be sharing the Zoom, that video recording, which will be uploaded on YouTube, and that will be shared to Umeshji. Umeshji will further share to the Calcutta, Gopa ma'am and rest there. One thing which I requested yesterday, after these two sessions, I will be sharing the Google form. So please don't forget to give your feedback. So not taking much time, hearty welcome once all to our keynote speaker sessions, who is going to take session, Group Captain Ashwini Kumar Bhaku. No word for you, brother. The way you are taking this session, we are really speechless. So uh, good hearty welcome to you. Hearty welcome to management Calcutta, managing committee Calcutta, and Gopa ma'am and others. Then all teachers who have joined. I think we can see 32 participants right now. So not taking much time and giving much time to our uh, keynote speaker of the day, who is going to speak on mental health. Yesterday it was emotional wellness. I'm going to speak on mental health, and it's very important in our situation in today's scenario. So over to Group Captain Ashwini Kumar Bhaku. Thank you very much. Thank you, Colonel Mishra, for your kind words, and good morning to everybody. Once again, welcome to this session for today. Uh, as we all know, that as most of us on this platform today are teachers, mentors. Uh, what I'm going to do is I'm going to start with a part of yesterday's talk so that we refresh our minds as to what we talked about yesterday, and then we take on from there into the mental health portion. So, Colonel Mishra, can I please have screen Yeah, share? please, your floor. Go ahead. All right. Thank you. It is not shared. I need to get that Okay, authority. Abhi right now, hone do. right now, right now. Yes, it is done. Thank you. I hope you can see my screen now. Yes, we can see audio, video both clear. All right, sir. Here is something which is we were talking about mental health, but I go back to my talk of yesterday, which is emotional wellness, and we covered this definition yesterday about emotional wellness. Emotional wellness is the ability to manage and express our emotions. So emotional wellness is limited to managing and expressing our emotions. We also talked yesterday about the pressures. We all face different types of pressures. A lot of pressures, whether it is our own expectations, whether it is confusion and ambiguity about day to day life, क्या होने वाला है, क्या होगा, whether it is communication issues like today. If you notice the screen, if you notice the participants since yesterday and today, you will always find that there are two entries as far as I am concerned, because I log in from two separate computers with two separate networks. Why do I do that? Because there is always this thing in the mind, somewhere in the background, ki what happens if one connection fails? What happens if one a computer fails? So, as a pilot, as an army person, I have been taught to always cater for contingencies. So, catering for contingencies, I have already established a backup system.
When I do that, the pressure from my mind, the stress from me goes away. Yes, I have a contingency plan. Yes, in case something happens, I can switch to my other computer, other connection. It may take a break of 30, 35 seconds, 40 seconds, but I will still be able to continue what I'm doing. And then there is personality. There are two major types of personalities that we have. We have people with the personality who are type A personality, and we also have type B personality. I think somebody's mic is on. Can you please mute it? When we are talking about type A personalities want everything to be perfect in life. And सब कुछ आज ही करना है. मुझे प्राइम मिनिस्टर आज ही बनना है. मुझे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आज ही बनना है. मुझे सब काम आज ही खत्म करना है. So they are the people who remain constantly under pressure and stress. But that's the type of personality they have. But they do land up with problems because all the time in their body, these stress hormones are running around. And that creates problems because excess of anything is bad for us. Then there is the type B. हो जाएगा. अरे आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा. Laid back. And they keep postponing things. और जब हम पोस्टपोन करते हैं तो क्या होने वाला है? एक टाइम पे एवरीथिंग विल पाइल अप और फिर हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. यू नो थिंक एक इमरजेंसी, एक हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं, उनका जो इमरजेंसी वार्ड होता है, ऑल द टाइम दोस पीपल आर अंडर स्ट्रेस. द डॉक्टर्स, द नर्सेज सारे इमरजेंसी में आ रहे हैं. और जब वो लोग इमरजेंसी में आ रहे हैं तो उनको कैसे हैंडल किया? अगर मेरे पास बहुत कुछ करने को है, बहुत चॉइसेस हैं, तो प्रॉब्लम होगी. आप किसी भी इमरजेंसी वार्ड में जाके देखें, डॉक्टर्स ने एक लिस्ट दीवार पे चिपकाया होता है. अगर ये केस है तो 1 2 3 4 5 फॉलो करो और सब कुछ वहां पे साइड ऑफ द बेड में पड़ा है. आपको सिर्फ एक्शन लेना है. तो स्ट्रेस वो अपना इस तरीके से मैनेज करते हैं. सो पर्सनैलिटी मैटर्स. इमोशंस आपने कल देखा हाउ इट कंट्रोल्स आवर बिहेवियर एंड एक्शन. स्ट्रेस मैंने कल टच किया था कि स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज बैड. एंड द रीजन स्ट्रेस इज नॉट बैड इज जब भी हमारे पे स्ट्रेस होता है तो द बॉडी रिलीज करता है सर्टेन हार्मोन्स which activate our body, our heart, our breathing. It activates all that. And because of that, our minds become sharper. We can think of more things. We can handle things better. And कैसे हम लोग करते हैं? अभी एज टीचर्स आप लोग कर रहे हो अपने स्टूडेंट्स के साथ. हम लोग सब करते हैं लाइफ में. We give them small problems. Class 1, class 2, class 3, and we keep adding the stress. Slowly we add the stress so that as they grow up and as they have to face the world, they are better prepared. थोड़ा सा यहाँ पे आजकल गड़बड़ होना शुरू हो गया विद सिंगल चाइल्ड फैमिलीज. सिंगल चाइल्ड फैमिलीज में क्या होता है कि पेरेंट्स वांट टू गिव एवरीथिंग टू देयर चाइल्ड ऑन द प्लेटर. बट कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं, then we are not teaching the child how to manage things on their own, how to get things on their own, how to have patience. तो उनका जो स्ट्रेस हैंडलिंग लेवल होता है many times lower हो जाता है. Brain chemicals, we talked a little bit about them, especially dopamine. All brain chemicals remain in the body all the time. They will never remain up. They will keep fluctuating up and down. So now we come to our talk today. What is mental health? Why is it important? What are the factors? How is mental health affected? We will talk about brain functions, warning signs, and handling issues. नोटिस कीजिए, ये देखिए, आप इसको रीड करके देखिए कि आपको ये कभी हुआ है क्या? I need some answers in the chat boxes. Have you faced any one of these? बहुत बारी एंग्री होना, वरिड होना, समटाइम्स रेकलेस होना, ग्रीफ, अगर किसी का डेथ या लॉस हुआ है,
माइंड इज कंट्रोल, ऐसे लगता है अभी लाइफ इज आउट ऑफ कंट्रोल। अल्कोहल और ड्रग्स या स्मोकिंग एक्सेसिवली करना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, एक बारी डाइट भी इतना कर लेना कि और कभी कभी इतना खा लेना, बिंज ईटिंग कर लेना। कई टाइम ऐसे लगता है कि हर्ट करो किसी को बाय वर्ड्स और बाय एक्शन, और सम प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय कर दिया, घर में 2-3 प्लेट तोड़ दो। Have disturbed sleep or confused. Has anybody faced these type of situations? Can I have some answers, please? Has anybody faced any of these type of situations? Any of the members? Some answers in the chat box. Okay. In case we have faced any of the situations, please understand that means more or less, and this is 90%, research has been carried out on this. This is 90%. It is indicative that it is not necessary that you may have to have faced all of the situations. You may have faced any one of the situations. So it is possible that all, if we have experienced any one of these situations, to whatever degree, चाहे वो degree 10 है, चाहे वो degree 5 है, चाहे वो degree 3 है, if you have faced any one of them, so that indicates कहीं ना कहीं आपको mental health issue हुआ है. Now what is mental health? Like physical health. हमको कट्स तो लगते ही हैं, हाथ पे कट लग गया, कहीं नी पे चोट आ गया जब हम खेल रहे हैं, या कहीं कुछ हो गया, दैट इज ऑल्सो फिजिकल हेल्थ इशू. कभी खांसी हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, दैट इज अ फिजिकल हेल्थ इशू, बट दैट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग इशू. सिमिलरली मेंटल हेल्थ में भी ये नेसेसरी नहीं है कि कोई भी अगर इशू हुआ हो तो दैट हैज टू बी अ लाइफ थ्रेटनिंग इशू. Basically, it has been found out by experts that the essence of mental health is that it is very similar to physical pain, headache, bruises, cuts, fracture, anything like that. It is not as if mental health जो है वो बहुत बड़ा कोई हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है. मेंटल हेल्थ जो है इज वेरी सिमिलर टू फिजिकल हेल्थ. छोटे छोटे इश्यूज भी हो सकते हैं, बड़े इश्यूज भी हो सकते हैं, फ्रैक्चर भी हो सकता है, छोटा सा कट भी हो सकता है. So now, what does World Health Organization say about mental health? Mental health is if a person can realize his or own abilities. आपकी क्या abilities हैं? क्या आप realize कर पा रहे हो? If you can realize, if you know your abilities, हाँ, एक आध दो चार पांच शायद नहीं पता हूं आपको, but generally you know your abilities. That means you are fine. You don't have anything to worry about. Can cope with the normal stresses of life. Day-to-day stress of life. काम करना है, we have to have some work which has been given to us, we have to run our families, we have to run our life, we have to manage with this COVID thing also, medical issues को भी हमको manage करना है. These are normal stresses of life. So if you can cope with them, fine. Can work productively. अब कहीं ना कहीं there is productivity which is happening. You're coming out with things. You can produce results. Do these results have to be 100%? Not necessary. But productive ho. Even if it is 50%, 60%, 40%, productive ho. So as long as you are productive, then you are mentally okay. छोटा छोटा कट जैसे लगता है, fully okay नहीं हो सकते. मे बी अगर आपका कोई हाथ में स्प्रेन आया है तो फिजिकल लिमिटेशन है. तो सिमिलरली अगर माइंड पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस है, ज्यादा थॉट्स है, मे बी योर प्रोडक्टिविटी विल गेट इफेक्टेड. तो यू मे बी अ लिटिल लेस प्रोडक्टिव, बट ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ इशू. एंड यू कैन कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी. सो अगर आप अपनी एबिलिटीज रियलाइज कर सकते हो, इफ यू कैन हैंडल नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, if you are reasonably productive and you are contributing to society, you are mentally healthy. There is no problem with you. Sometime ये fluctuate कर सकता है between a scale of 1 to 10. Sometime थोड़ा mental health down होगा, maybe you are up to 2, 3, 4 many times, and sometimes you may be 8, 9, 10. So it may fluctuate.
but most of the time we all stay in the average region of 4 to 6, 7 or something like that. We all tend to stay within that average region. These are some of the facts. About 90 million Indians, 7.5% of the country, suffer in some form or the other from mental disorder. National Institute of Mental Health and Neurosciences say about 150 million Indians need active intervention. Here are some more facts. 2019 में mental health पे जब study किया, in the corporate sector about 42.5% of the employees are facing either an anxiety issue or some form of depression. And depression is continued sadness. Without anticipating coronavirus के बगैर भी World Health Organization had predicted कि 2020 में nearly 20% of the population will suffer some form of mental illness. Why are we saying this? Because आजकल day-to-day pressures are increasing, demands are increasing, expectations are increasing. So जैसे ही अपनी बॉडी को आप ज्यादा पुश करते हो, तो ऑब्वियसली बॉडी थोड़ा फेल भी तो करेगी ना. Similarly, the mind will also fail if you push your mind too much. So why is it important? Because हमको day to day तो live करना है. We have to have relationships. We have to have, and physical health is necessary. So mental health is important because we have to survive and we have to live and we have to live happily. So stress, depression, anxiety can affect our mental health. So stress lena, we have to reduce down. How we do that? Planning. How we do that? By making coping strategies. How we do that? Making sure कि हम postpone नहीं करें काम. Anxiety about something in the future. जब आप उसको predict नहीं कर सकते, तो उसको सिर्फ prepare ही कर सकते हैं ना. तो बार बार उसके बारे में सोचने का क्या फायदा? So there is no point in continuously being anxious. Prepare for the future, but don't continue to worry about it. वो आपके कंट्रोल में नहीं है. Incident in people's life, interpersonal collection, बहुत important part है. Interpersonal connection. We know we are human beings, we are social beings. We like to be around people. So your interpersonal connections hai, this plays a major part. Looking after mental health can preserve a person's ability to enjoy life. अगर आप physically healthy नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकते ना घूमने के लिए. So similarly, अगर आप mentally healthy नहीं है, तो आपको best to best site में मैं दिखा दूं, आप ताजमहल भी देखने चले जाओ या वर्ल्ड के 7 वंडर्स भी देखने चले जाओ, आप खुश नहीं हो. Because mentally you are troubled. You're not happy. So we need to take care of our mental health. That's why it is important. Now, who? Why is mental health important? We have covered. We can realize our full attention. We can cope with stresses of life and we can work productively. Notice who all can be affected. Now, मैं एक fighter pilot हूँ. And as a fighter pilot, जब मैं वो fighter cockpit में बैठता था, तो मैं I always used to think that nothing can touch me in this world. I have the power with me. But truly speaking, ऐसा नहीं होता है. That is a false sense of being well. Anybody, whether it is a celebrity, whether it is a poor person, anybody can be affected. We all are, possible. Any one of us can be affected by this. So it is not only एक ही type of people will get affected. It can be anybody who can be affected. And during the COVID, this is what the survey said. About 300 lockdown deaths took place all across the spectrum. So that is because mental health of these people were affected. Because they got disturbed, उन्होंने strategy नहीं बनाया था about how to deal with their future or with this type of an issue. With a lockdown, with reduction of pay, with businesses closing down, with having to stay all the time at home, with having to learn new things, with having to get onto the computer and doing these Zoom meetings or taking classes by the electronic media. Prepared नहीं थे हम लोग.
So many people could not handle this, and these are continuing. Some factors. Yesterday we talked about this perception, which is our viewpoint. Today I am showing you something more here. हमारा viewpoint जो है, it is based on our background. हमारे background पे based है. कहां से हम आए हैं, कहां हम educated हुए हैं, किस type of environment से हम आए हैं. But background हम बदल नहीं सकते, तो उसके बारे में stress करने का कोई फायदा नहीं. It is similarly हमारा जो culture है, हमारा जो value system है. Today, you know, a lot of people say, अरे country में बहुत ज्यादा corruption है, बहुत corruption है, कुछ नहीं हो सकता country का. लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? Honesty is the best policy. We all would like that the country or the world has no corruption, and we can live our life in an honest manner. Education से हमारा viewpoint बदल सकता है, experience से बदल सकता है, exposure से बदल सकता है. Experience and exposure, आजकल Google पे जाएं, आप कहीं का भी experience और कहीं का भी exposure ले सकते हैं. And then what is our self image? हमारा self concept क्या है? अगर आप ये सारे points देखें on which your viewpoint is based, except for background, अगर हम learn करने पे आए तो हम सब कुछ understand करके, अपनी education बढ़ा के, experience बढ़ा के, exposure बढ़ा के अपना viewpoint change कर सकते हैं. And if we can change our viewpoint, then हमारा perception अगर change हो गया तो हमारा stress level भी कम हो सकता है. तो हमारा जो mental health है, emotional wellness है, वो improve हो जाए. So that is why we need to understand how we are seeing ourselves. कुछ लोग अपने आप को underestimate करते हैं, कुछ लोग अपने आप को overestimate करते हैं. It is necessary कि हम अपने आप को एक accurate self assessment बनाएं. Now I know I am 5 feet 7 inches tall. अगर मैं सब all the time I keep looking at myself and keep saying, अरे मैं 6 फुट का होता तो ऐसे ऐसे हो जाता या ये हो जाता. Now that is going to cause issues. So therefore, I need to have an accurate self-assessment of myself. Factors which affect health, these are the three major factors: social, financial, family history, and in case we belong to an ethnic group which is marginalized. Somebody's got again their mic on. Can you please put it off? So please understand this, that there can be many reasons why, you know, we can be affected. इसीलिए अगर हम social circle से हमें कोई निकाल देता है तो obviously हमारे पे pressure होता है. So we must understand that. How is it affected? Now this is the main part which I want to talk about today. Colonel Mishra, could you please see who is not muted and mute them, please? Okay. Now see our brain. Ever since we are born, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के साथ एक पाथवे बनना शुरू होता है, from one point to the other. And ये जो pathway है, this pathway like a normal road gets coated with a system ताकि वो पक्की रोड बन जाए. थोड़ा सा कच्चा शुरू होता है and then it becomes pakka. When we keep experiencing the same type of thing again and again and again, वो पक्की रोड बन जाती है. And there are millions and millions and millions of pathways in our brain. But there is a point here. Blazing a new trail through this jungle of neurons is much harder than flowing down a well-paved highway. Look back. एक हमारा pathway बन गया है. अब अगर हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो वी वुड लाइक टू टेक अ बेटर रोड ना. वी डोंट वांट टू गो अगेन एंड मेक अ न्यू रोड.
सो ऑल द टाइम हम लोग क्या करते हैं, वी एक अगर पेन का पाथवे बना हुआ है तो उसको हम अवॉइड करते हैं, और एक अगर फेमिलियर पाथवे बना हुआ है तो उसको हम फॉलो करते रहते हैं. बट व्हाट हैपेंस विद दैट, व्हाट हैपेंस इज हम ऑल द टाइम एक ही चीज करते रहते हैं. एंड जब हमारे को कोई नई चीज करनी होती है, then what happens is we feel we are out, we are extending ourselves, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, because we are familiar. अगर as a teacher, if I take it as a teacher, I am used to, earlier we were all used to going to the class, taking the class, using the chalkboard. chalkboard के बाद white boards आ गए, okay, that was also okay. बाद में हमारे पास प्रोजेक्टर्स आ गए, we could project some slides and use that, okay, that was also okay. but physically क्लास में जा रहे थे ना, बच्चे सामने थे ना, उनका रिएक्शन हमको मिल रहा था ना, and we could interact with them ना. और suddenly कोविड के कारण all that is gone. Now we are in our teaching, we have got a familiar pathway कि इसी pathway को follow करो, और suddenly अभी मुझे बोला गया कि नया pathway बनाओ, और नया pathway बनाना is a pain because it is like this jungle. नए पाथवे बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. आई हैव टू कट द जंगल, आई हैव टू मेक द रोड, और फिर मैं कच्चा रोड बनाऊंगा, फिर उसको पक्का करना पड़ेगा. इट टेक्स टाइम टू क्रिएट दिस पाथवे. नोटिस, एंड व्हेन यू आर मेकिंग दिस न्यू पाथवे, you will feel unsafe, you will feel under tension, you will feel under stress, and then you will want to go back to the old pathway. तो फिर आप रिमार्क्स करने लग जाओगे, ये सिस्टम तो चलेगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, इसमें तो ये प्रॉब्लम होगा, इसमें वो प्रॉब्लम होगा. बिकॉज वी वांट टू गो बैक टू द सेम सिस्टम. मुझे क्लास में ही जाना है, मुझे क्लास में ही पढ़ाना है, वो मेरा पाथवे बना हुआ है, तो वो मुझे समझ आता है. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी मुझे कई टाइम समझ नहीं आती, एंड देयरफॉर आई फील अनसेफ. नाउ जब ये पाथवेज बनाते हैं, तो उस पाथवे, जब कच्चा पाथवे बनाते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट वी पुट अ लेयर बाय अ सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन. एंड ये माइलिन जो है आफ्टर पुबर्टी खत्म हो जाता है, नियरली खत्म हो जाता है. इसका मतलब कि अगर आफ्टर पुबर्टी हम कोई नया पाथवे बनाएंगे, वो हाईवे तो नहीं बन सकता. उसको हाईवे बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. बन सकता है पर बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है. इसीलिए इफ एज टीचर्स वी सी the first 6 years of the development of the child are very very important, because myelin उस टाइम सबसे ज्यादा होता है, पाथवे सबसे ज्यादा बनते हैं, and that is why parental influence at that time is very important, because initial pathways जो है वो घर में बनते हैं. The next step comes in when the child comes into the school, till the time they are 14 15, 13 14 15. वो पाथवे जब हम बनाते हैं तो वो अगेन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. बिटवीन अबाउट 14 टू 18 ये पाथवेज बहुत कम बनते हैं, बिकॉज एक्सप्लोरिंग दोबारा स्टार्ट हो जाता है. समवेयर अराउंड 18 टू 21 दोबारा मेलेनिन आता है, so that a few more new pathways can be made, new highways can be made. So your role as teachers, as parents, is extremely important in the future action or reaction or work situation of the new generation. It takes 45 days. every day practice करने में, वो जंगल काट काट के, वो रास्ता बना बना के at least 45 days लगते हैं to make even a new trail. हाईवे तो छोड़ दीजिए, to make a new trail it takes 45 days. So we must understand this, and this is the time जब हमारा इमोशनल वेलनेस डाउन जाएगा, क्योंकि हम इरिटेटेड होंगे, एंग्री होंगे, एंड हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है. हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दिस एट दिस टाइम? हमको एक दूसरे से बात करनी है, हेल्प लेनी है, एंड इफ वी कैन टेक हेल्प ऑफ अदर्स,
without letting our ego come into the way, then only we will be able to get mentally healthy. One more part is that is when we spoke about yesterday, emotions. Emotions are controlled by this point on the right, which is called the amygdala. Initially, prehistoric man के time पे, it was the amygdala only which was there, because हमारे को दो ही चीजें करनी थी, सरवाइव करना था, जिसके लिए हमें दो ही चीजें करनी थी, फाइट और फ्लाइट. अगर मुझे कोई डेंजर दिखता था और मेरे में क्षमता थी तो मैं लड़ पड़ता था, और अगर क्षमता नहीं थी तो मैं भाग जाता. The other brain, the prefrontal cortex and the hippocampus and all these ये बाद की पैदाइश. But these are the ones which regulate memory. These are the ones which thinking is there, logic is there. तो जब हम इमोशंस से काम करते हैं तो हम सिर्फ वो सर्वाइवल मोड में काम करते हैं, ओनली इन दैट सर्वाइवल. लेकिन अभी एवरीथिंग इज नॉट सर्वाइवल, तो अननेसेसरी रिएक्शंस दे रहे हैं. इसीलिए एवरीबडी सेज अगर आप एजिटेटेड हो, एंग्री हो, कुछ भी हो, काउंट 1 to 10. Why? Because वो 1 to 10 में आपका prefrontal cortex and hippocampus comes into play, और वो लॉजिकली आपको बताता है यहां कोई थ्रेट नहीं है, रुक जाओ, ऐसा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. एंड दैट इज हाउ वी कैन हैंडल आवर मेंटल हेल्थ. अगर हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहे तो हमारी ओन एबिलिटीज हमें नहीं दिखेंगी. We will not be able to deal with the normal stresses. We will not be able to contribute to society, and we can also harm ourselves. Warning signs, कल हमने काफी warning signs cover करे, so I am going to just rush through cover a few more. They are the same actually. Just to remind you: low mood, pessimism, desperation, anxiety, sleep problems, withdrawal from friends, alcohol and drug use, threatening suicide, strong expression to die, अपना possessions लोगों को देना शुरू कर दो, unexpected anger, unexpected irritation, unexpected rage. That is the warning signs, and here is some interventions. अगर आप खुद या आसपास के लोग, if they are going through it, yesterday in emotional wellness I covered some steps on how you can take care of yourself. But now how you can take care of others, बहुत सिंपल सा तरीका है. You just have to show that you care. थोड़ा सा टाइम दीजिए. A time is a very valuable commodity, more than money. There is no value to time. थोड़ा सा टाइम दीजिए. Show that you care. उसका हालचाल मालूम कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. Yesterday there was a question also that अगर if we know that somebody has a potential और वो potential से बाहर नहीं आ रहे, ऊपर नहीं आ पा रहे, तो क्या करें? कहीं ना कहीं that person may be struggling. Maybe कहीं उसको पहले somewhere down, that person may have tried to bring something up into a forum or somebody shot him down. किसी ने उसकी ईगो को और उसकी सेंसिटिविटी को नष्ट कर दिया है, तो वो डर गया. तो शो दैट यू केयर. दूसरों से बात कीजिए, वो कैसे फील कर रहे हैं, व्हाट आर देयर थॉट्स. एंड अगर नहीं हो पा रहा है तो देन गेट हेल्प, get into contact with some people. When we say how show you care, take all talks of distress seriously, listen carefully, reflect कीजिए. When I say reflect means दूसरे को बोलिए, आपको समझ आ रहा है, is this what you are saying? आप कह रहे हो कि मैं आज बहुत स्ट्रेस में हूं, is this what you are meaning? So when we say this, we are reflecting on what we say. लैंग्वेज इसमें कोई साइकोथेरेपिस्ट के पास कोई मैजिक लैंग्वेज नहीं होती. एंड देयर इज नथिंग, जो भी आप दिल से बोलोगे, दैट इज राइट, बिकॉज दैट शोज केयरिंग. स्टेप 2, step 3, that is in case nahi hai to referral and reassure the person and go. This is what we covered yesterday about how to take care of us. But I want to go a little ahead of that, and that is gratitude. One of the ways to make sure you are mentally happy
mentally healthy is to be grateful. This is something that we forget to do. हम लोग डिमांड करते रहते हैं, हम मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं, अगर मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वी आस्क फॉर मोर, बट कहीं ना कहीं हम थैंक यू करना भूल जाते हैं. वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव. टुडे what are you grateful for? Moment you start thinking about what you are grateful for, believe me, more than 80% of your mental health problems will go. I have practiced this, I have tried this on for the last 20 years on a lot of my people who have come in contact with me. 70 to 80% of your problems, of your stress will go away when you start realizing what you are grateful for or what you have. So today I am requesting all of you to start a diary in which all you write is, at the end of the day, what are you grateful for? 3 points every day. What are you grateful for? They can be very simple. I am grateful कि आज मुझे अच्छी तरह से खाना मिला. I am grateful कि आज किसी ने मेरे ऊपर पत्थर नहीं मारा. Any such things, please write in your diary. And 30 days में आप देखेंगे, there will be 90 odd things that you will be grateful for. And suddenly, जो आपके पास नहीं है, वो shadow में चले जाए. This is one of the best ways to get mental health. इसके benefits, research by Robert Emmons, who is one of the leading people in understanding this. उसने 8 साल से 80 साल के लोगों के ऊपर research करके, this is the end of the result. Psychological higher levels of positive emotions you will always have when you are grateful. You will always be more alert, alive, and awake. You will be more joyful and have more pleasure, more optimism and happiness. Physical, आपका immune system better होगा. Less bothered about body aches and pressures. You will have lower blood pressures. You will exercise more, and you will sleep longer and better. Social, more helpful. You will be more generous and more compassionate. आपका पूरा nature ही बदल जाएगा. You will forgive more. You will interact more, and you will feel less lonely and isolated. Gratefulness. And here is something else I want to show you. Kindness, which is part of gratefulness. I want to show you this little video clip. I'm going to stop share just to check that my audio is on, and I will start sharing again. Okay, here it is.
I want to pause this here. When we say we should be kind and we should be grateful, real kindness is when you are ready to give up something that you need yourself. So कई टाइम हम बोलते हैं अगर मेरे पास कुछ बच गया तो मैं दूंगा. Okay, that is kindness. Definitely that is kindness. But if you have to transcend that when we are talking about mental health, so when you share what you need something yourself, that is going to a higher level of kindness. So we talked about mental health, why it is important, factors which affect mental health. I am going to stop here because I want to now open up the forum for a lot of questions, because this is what we need to do, asking questions and clarifying. I have also put up my number and my Gmail on the screen. We will try and take on as many questions here now today. And in case, I am not able to take them on here, then you can always write to me or message me and I will always answer your question. So now the forum is open to all of you for asking any questions, whether it is on stress, mental health, or emotional wellness. You can put your questions in the chat box also. I will try and answer them. Floor is open to you. So much silence. Okay, let me ask a question. Who all feel that they are under stress? Are you feeling any stress these days? Yes, I am. Yes. And we all. Okay, here is a question: how to deal with our negative emotions such as fear and anxiety? Yes, it's a very good question. How do you feel with your negative emotions such as fear and anxiety? Most and 99% of our emotions come from 2 points. One is love and the other is fear. Any emotion which is negative comes from fear. But we need to go to the root cause. किस चीज से डर रहे हैं हम? एंजाइटी किस चीज के बारे में है? इफ आई एम एंशियस कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे जॉब में क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा, द वे टू रिड्यूस एंजाइटी इज टू प्रिपेयर फॉर दैट. इफ आई थिंक I am going to retire, then I need to make sure I have prepared for my retirement. I have catered what do I need for retirement. I will possibly need some place to stay. I will possibly need some funds to be able to look after my health and my life. So I need to start planning and prepare about it. So when I prepare about that, my anxiety reduces. So anxiety reduce करने के लिए there is only one simple method and that is preparation. Once you start preparing for the future, for that event, let us say आज से 10 दिन के बाद आपका एक बहुत बड़ा सेमिनार है जहां पे आपने प्रेजेंटेशन देना है. So what is the best way to remove that anxiety? Prepare. 100% of that anxiety will not go. And we don't even want 100% of that anxiety to go. अगर 100% of the anxiety चला गया तो आपके अंदर वो हार्मोन फ्लो ही नहीं होगा when you are on the rostrum, when you are in front. And that is necessary for your brain to be sharp, for your heart to be pumping, for your blood flow to take place and take that oxygen into your head. So preparation will remove 80%, 85% of the anxiety. To remove anxiety, prepare. Second thing, to remove anxiety, accept what is factual today. There is no point in being anxious about something which you cannot change. So accept what you cannot change. अगर आप उसको change नहीं कर सकते हो तो उसके बारे में unnecessary worry करने का कोई फायदा नहीं है, because end result कुछ होने वाला नहीं. So to be able to handle anxiety, prepare
and acceptance are two major factors to be able to remove anxiety. And once you are handling those, then you will be able to have a handle on your anxiety. The other part was fear. Again, fear is only because of anxiety. So once you are prepared, the fear will reduce and you will be able to then act because the fear has reduced. Sir, there are two questions in the Yes. chat box. Ji. So I you have can that take question. up. I will take that on. As teachers, how can we put our children at ease considering they are in stress too? Absolutely right. You are also in stress, the children are also in stress. Yesterday, मैंने self care की बात करी. Now, self care में पहले आपको अपने आप को संभालना. Your diet has to be good, your exercise has to be good, your acceptance of things has to be good, and you have to communicate better, and you have to be part of a family. Once you start doing that, you will start becoming less stressed. And then only you will be able to extend this to the others. However, as a teacher and as a mother, as a father, many times हम अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करके विदाउट इवन सॉर्टिंग इट आउट हम लोग दूसरों के साथ we can remove their stress. The correct method is please handle your stress first and then extend it, but sometimes you have to extend. How do you do that? बात करके. I covered in one of the slides to say show that you care about their problem. बच्चे के साथ बात कीजिए, interact कीजिए. You know, we are one of the things that we are all very used to is as teachers, mentors and all is to take out mistakes, you know. लेकिन there is something which all teachers also do. They motivate also. इस टाइम जब बच्चा स्ट्रेस में है, maybe the level of motivation and appreciation needs to go higher. थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है. तो you know, think of a very small child, maybe, you know, who's just learning how to write. जब उस बच्चे ने छोटा सा एक किसी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा ए भी लिख दिया, तो we really appreciate that child. बहुत अच्छा किया. We all clap and everything, you know. But as that child grows up, now we expect उसकी writing perfect होनी चाहिए, spellings perfect होने चाहिए. Everybody is not the same. So if it is not there, if you find the person is under stress because of this and they are struggling, extend that helping hand to them. Yes, I know that we have to maintain the standards of the school and as per, you know, the society and all that. But if we can make sure that with our help, they can come up to that. If we have to put in extra effort to do that, that is what we need to do. So maybe to be able to look after the students when you are also under stress is that you will have to work harder. It is not going to be easy, but that's the only way. But at the same time, please take time for yourself. Please find a time where you can de-stress and where you can find for yourself. There is one more thing which is here, anxiety about detaching from a particular lifestyle. Yes, when we are used to a particular lifestyle, वो पाथवे बना हुआ है ना ब्रेन में, अरे इसी लाइफस्टाइल को मुझे जीना है, ऐसे ही मुझे मजा आता है. तो हाउ डू वी डिटैच? एंजाइटी होगा. वंस अगेन एंजाइटी का सिस्टम क्या है? वी फॉर्म अ न्यू प्लान. लेट अस गो एंड गेट ऑन टू अ न्यू ट्रेन, अ न्यू रूट, अ न्यू डेस्टिनेशन. उसके लिए प्लानिंग चाहिए होगा, उसके लिए हमारे को थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा. वंस वी डू रिसर्च एंड वी प्लान, थोड़ा सा फियर, थोड़ा सा एंजाइटी होगा, but get onto that pathway, start walking on it, and slowly that anxiety will go. And that is the only way to handle it. किसी चीज को छोड़ना इतना easy नहीं है, किसी habit को छोड़ना इतना easy नहीं है. वो pathway बार बार interfere करेगा. So you need patience and you need your inner strength
और इस जर्नी में many times you need somebody जो आपके साथ थोड़े रास्ते तक चले. Get a friend, get a relative, get an outsider, get a counselor, and walk with them. If there's any other question, please put it up. Okay, here is a question on saying how to deal with panic attacks. Again, a very important question, and many times हम सब लोगों को panic attacks हो सकते हैं. But again, panic attack is because of what? Because of something which we think is likely to happen. Because suddenly हमारे ऊपर प्रेशर डाल दिया किसी ने और हमें ऐसे लगता है हम उसको डील नहीं कर सकते. So the first action of a panic attack is sit down. Sit down and start deep breathing. Your breath, when you take in that oxygen, it has a calming effect. Please understand, आपको कोई भी एक्शन इमीडिएटली नहीं करना है. आपको सडनली जो आपके ऊपर पॉइंट आया है, आपको उसका आंसर इमीडिएटली नहीं देना है. There is no need. So sit down. Calm yourself. There is no hurry. Tell yourself there is no hurry to handle this. See, until unless it is a life-death situation, panic attacks may, by the way, everything seems to be a life-death situation, you know. But even in a life-death situation, you can be calm. I will give you an example about being in the cockpit when you are flying at some 35, 40,000 feet. You are alone in the cockpit. In the cockpit is pressurized. A fighter aircraft में हो, cockpit pressurized है. अब suddenly जो canopy है वो break कर जाती है. And when the canopy breaks, there is depressurization which happens. You know, when we fly in the aircraft and you're flying at 35,000 feet, because the air is very rare there, you know, air is very less there. So अंदर से हम pressurize करते हैं cockpit को. जब आप aircraft में भी fly करते हो, any civil commercial aircraft also, there is a pressurization which is there in the cockpit, inside the cabin. जब suddenly वो break होता है तो वो depressurize होता है and your entire pressure leaks out. अंदर से सब कुछ बाहर की तरफ जाता है. Even your blood from your veins tend to go out. Your eyes are the softest portion. The eyes में से there's a tendency for blood to flow. Nose and eyes में से. Now ये situation हो गया, but I am alone, 35,000 feet. मुझे survive करना है. Even there, in the life and death situation, first action is calm down. Take a deep breath. My oxygen mask is on already. थोड़े से deep breath लीजिए. Let that extra oxygen go into my body. Let it hit my brain. My brain will become sharp again. Then I know. अभी मुझे dive मारना है. I have to get down below 10,000 feet. वहां ऑक्सीजन है. वहां पे मैं ठीक हो जाऊंगा. It will take me few seconds to dive down. But that 1 or 2 seconds of calmness will bring me to do the action of diving. लेकिन अगर मैंने वो 1 or 2 seconds नहीं लिए तो मैं कुछ गलत कर सकता हूं. पावर को पीछे करने के लिए बजाय नीचे को जाने के लिए ऊपर को जा सकता हूं. So give yourself those 1 or 2 seconds of deep breathing. 1 minute deep breathing is a lot of deep breathing. So once you deep breathe, once the oxygen goes in, you will be able to handle any situation that comes up. Will that be the best solution? May not be. But you will slowly start coming out of that situation. And then once you have more control over yourself, then you'll be able to handle it even better. So train yourself for this. No reaction. Reaction panic करता है. Response करना चाहिए. And when you respond, which is from the frontal brain, reaction is from the emotional brain. So when frontal brain करता है, so then is when things happen.
I have a hand raised by Sumanji. Please ask. नमस्ते सर, सुमन तिवारी जी. सर, मेरा एक सवाल है। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन कुछ ऐसा होता है, कुछ अब्यूजिव लैंग्वेजेस सुनने को मिलती हैं, तो उस समय दिल और दिमाग की एक बहुत विचित्र स्थिति होती है। तो सर, ऐसे सिचुएशन में अपने आप को कैसे संभाला जा सकता है? यस मैम, आप बिल्कुल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मेनी टाइम जब अब्यूजिव लैंग्वेज यूज होती है तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, बिकॉज वो हमारे कल्चर और हमारे वैल्यू सिस्टम पे हमला करता है। लेकिन Yes. इसी चीज के लिए, इफ यू रिमेम्बर, मैंने अभी कवर किया है कि आपको अपना जो सेल्फ इमेज है वो एक स्ट्रांग बना के रखना है। देखिए, लोग मेरे को क्या कहते हैं मेरे बारे में, आई डोंट नो, बट मुझे अपनी एक असेसमेंट करनी, मैं क्या हूं, मेरी क्या स्टैंडिंग है, मेरी क्या नॉलेज है। नो, एक बारी मैं आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ इमेज, देन मेरे ऊपर कोई कुछ भी कीचड़ फेंके, मैं अपने आप को बॉडी के ऊपर मैंने एक सॉर्ट ऑफ अ कवच बना लिया, वो कवच से ठकरा के वो कचरा बाहर चले जाएगा, वो मैं ले ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैंने वो कचरे को एक्सेप्ट कर लिया तो गंदा तो होगा हेड, और गंदा होगा तो फिर उसकी सफाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट एक्शन जो हमने अपने आप को ट्रेन करना है इज टू क्रिएट दैट सेल्फ इमेज अबाउट माई। सी, इफ माई इमेज इज बेस्ड अपॉन दुनिया क्या कह रही है, फिर तो मैं कभी इधर जाऊंगा कभी उधर जाऊंगा। Yes. I must use my friends, my relatives, my known people to be able to understand and make a good self-image about myself, a realistic self-image about myself. हाँ, मेरे में कुछ flaws हैं, वो भी मैं accept करता हूँ. Everybody has flaws and nobody is perfect, so I accept the flaws. So when you start having a good self-image, तब जब कोई आपके ऊपर फिर कीचड़ फेंकता है, आप उसके बारे में बॉदर नहीं करते, आप वहां से क्वाइटली वॉक अवे कर जाते हैं। इट इज एग्जैक्टली जब आप सड़क पे जा रहे हैं एंड आप कीचड़ देखते हैं तो आप रास्ता बदल देते हैं ना। उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए जो आपकी तरफ कोई चिल्ला रहा है, गालियां कर रहा है, आपको शायद 1-2 मिनट वहां खड़ा होना पड़े, बस थोड़ी देर के लिए जस्ट वॉक अवे एंड रिमाइंड योरसेल्फ अगेन अबाउट हु यू आर। एंड जैसे ही आप वो करते हैं, दैट कीचड़ हैज नो वैल्यू। कीचड़ की वैल्यू तभी है अगर आप उसको वैल्यू दें, अगर आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे तो वो जीरो है। वो दूसरा पर्सन ज्यादा इरिटेट होगा अगर आप उसको उसके कीचड़ की वैल्यू ना दें। दैट इज ओके, लेट हिम गेट इरिटेटेड और हर गेट इरिटेटेड रादर देन यू गेट इट। I think we have come to about 10:57 now and we have to close the session, but if there are any other questions, I have shared my email ID and also my telephone number, so you are welcome. Here it is in case anybody wants to note it down again. And I now hand over to Colonel Mishra. Sir, over to you for closing the session. थैंक यू अश्विनी, ब्रदर अश्विनी जी, सेशन कितना अच्छा था ये हम तो जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आपसे अच्छा इसको कोई नहीं कर सकता, और हम ये भी जानते हैं कि एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। अगर मैं कुछ शब्दों का कुछ अल्फाज यूज करूं कि ऐसा है तो शायद वो बहुत बड़ा जस्टिस नहीं होगा। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ हैं, जो टीचर्स हैं हमारे, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इट हैज लार्जली बेनिफिटेड टू। सो मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा, मैं 2 लोगों को बुलाना चाहूंगा जो उसके बारे में कल के और आज के सेशन के बारे में अपना व्यू रखेंगे। सबसे पहले तो मैं गोपा बर्बन मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको जो कल सेशन दिया है अश्विनी जी ने इमोशनल वेलनेस पे, और आज जो दिया है मेंटल हेल्थ पे, उस पे आप 2 शब्द जो कहना चाहें कहें। और दूसरा, आप ही को मैं कहता हूँ क्योंकि आप ही लिंक है कलकत्ता की, तो आप एक किसी और को जिसको समझते हैं उसको भी आप नॉमिनेट करें, वो भी 2 मिनट इसके बारे में कहे, तो हमें समझ में आएगा
कि हम जो कर रहे हैं कहाँ तक अच्छा है। हमको मालूम है कि हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, और हमको ग्रुप कैप्टन अश्विनी कुमार बाबू से अच्छा इस विषय पर कोई मिल नहीं सकता। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। Very much thank So over to Gopal. Yes, sir. Thank you, sir. And Ashwini Bhakuji, sir, really great session for all of us, because we have come to know lots of things, and especially about the how to tackle the situations whenever particularly we are getting affected. That is a very practical sense of approach which we are developing, especially after joining so many sessions from Rotary. I have acquainted some of the important words. The words that work in my life first is gratitude, sir. I have personally, I'm telling that, because for this particular word, certain that negativity that I faced or I have changed. I'm trying to change myself due to these particular sessions, which I have learned many things from these lectures. And really, sir, we are thankful to you for your delivering this kind of so important points, so that all the teachers, I think my teachers and others are also very much benefited, and we will be now I think we are ready to apply it towards our children also, because this is our aim. Because as a teacher, this is a platform where we are learning, and we have to inculcate and we have to spread it to the generations, and that is our aim. Sir, that much only I will give it to Ranjita madam to say Thank you, some ma'am. words about this. Thank you, ma'am, and thank you, sir. As far, I'll just want to brief it down that to understand the emotional wellness, or to create an emotional wellness within us, or with the people, or with the candidates, or with the students with whom we are dealing our everyday life, we need to understand our mental health, and we need to understand the situation of their mental health also. Once we understand, then we can we can calculate the reason, or we can know the reason of the reaction, or we can know the reason of the change in behavior of that particular person, or student, or family member, whoever it is. And once we understand the reason, we will be able to generate one solution for it, which will help the other person to avoid any harsh decision, and it will help us to make such a decision which will not be a pleasant one. So once we understand that the reason of the biological reason, or the physical reason behind such behavior, then we can easily find one alternate solution which will help us to overcome that particular moment, and to give to take a right decision, which will be a well-being for both the people who are doing that conversation at that point of time, or who are the team members of that particular organization, or the family members, like that. So it is really beneficial for all of us, and especially for myself, I would like to say that few things about the brain chemicals, and about the reason, and about the origin of these brain chemicals and the reaction of it. We need to understand these phases also before judging another person, that, oh, this person has said this, so I'm labeling that, oh, this person is like this. So now I will not label that person. Rather, I will put my knowledge to more depth to understand the origin from which that has generated, and I'll try to solve it out. Thank you, Ranjita ma'am, and Gopal Varman ma'am. In fact, it's very valuable views from your side.
हमारा ये मानना है कि अगर आपको रिटर्न पाना है 1 साल के लिए, तो जो बैंकिंग की बेस्ट स्कीम्स है आप उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपको 10 से 15 साल में रिटर्न पाना है 20 साल में, तो लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में या पौधों में आप इन्वेस्ट करें, मिल जाएगा। लेकिन अगर लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाइफ में या अपनी लाइफ के बाद भी आप रिटर्न पाना चाहते हैं, तो एजुकेशन है। वही हम लोग ये प्रोग्राम लेकर के आए हुए हैं और वी आर ब्लेस्ड कि हम टीचर्स को ये टीचर्स के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज ये जो संजीवनी हमारी है, जो रोटरी क्लब पुणे रिवर साइड की फ्लैगशिप है, हमने बीच में बहुत सारे सेशंस किए हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अभी हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हुए हैं कि अब हम आगे से 2 सेशन महीने में वो ग्रुप कैप्टन अश्विनी कुमार भाकू जी का करेंगे, जो इन्हीं टॉपिक पे होगा, एक इमोशनल वेलनेस पर और मेंटल हेल्थ पे 2 सेशन होगा और एक सेशन होगा स्टूडेंट्स के लिए, जो कि किसी ओपन टॉपिक पे होगा जो कि उनके लिए यूजफुल है। तो 3 टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं। वो कलकत्ता के स्कूल्स के लिए भी हम कर सकते हैं, हमारे जो और भी स्कूल है उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि या हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर जो इस प्रोग्राम के हैं उमेश कुमार जी, उन्होंने गोपाल बर्मन मैम को रिक्वेस्ट किया कि 12 तारीख की डेट है, अगर आप एकोमोडेट कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ये नहीं है कि हम नेक्स्ट सेशन में हम आपको लेंगे। नेक्स्ट Sir, you got muted. Sir. ओह सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने तो जो बोला वो सब कुछ सुना ही नहीं पड़ा ना। नहीं, अभी म्यूट हुआ। बस 12 जून के बाद की बात बोल सकते हैं। ओके ओके, सो 12 जून को अगर हो सकता है तो ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अश्विनी जी ने कहा है कि बिल्कुल टेंशन कहीं लेने की जरूरत नहीं है, आगे हम उसको आगे भी कर सकते हैं और 12 जून वाला सेशन हम किसी और को दे सकते हैं, तो वो कोई ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर्स को के बारे में जितना भी कहा जाए, टीचर्स आर एक्चुअली द नेशन बिल्डर, यू ऑल आर नेशन बिल्डर एंड वी आर वेरी हैप्पी। आज हम जितने लोग देख रहे हैं, 35 लोग ज्वाइन किए हुए, ऑलमोस्ट 3/4 लेडीज। कहा जाता है कि I don't remember who said, I think it's not Sikandar, it's somebody else. हमें केवल 100 पढ़ी लिखी माताएं दे दो, मैं दुनिया बदल दूंगा। और मेरे पास तो आज सारी पढ़ी लिखी दुनिया को बदलने वाली शिक्षिकाएं यहाँ बैठी हुई हैं, तो सबको मैं नमन करना चाहता हूँ, सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े, दोनों सेशन में भागीदारी की, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लेता हुआ हम आज के प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जाने के लिए जो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स है, उसके लिए प्रोग्राम के चीफ कोऑर्डिनेटर रोटेरियन उमेश कुमार जालान, जो हमारे रोटरी क्लब पुणे रिवर साइड के डायरेक्टर फाउंडेशन एंड कंप्लायंस है, उनको इनवाइट करूंगा फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ओवर टू उमेश। Yeah, good morning to you once again. I fully endorse the views of our President, Colonel K.C. Misra, that for the topic which we have covered under these 2 sessions, the best person we could have to talk on the subject can be none better than our group captain, Rotarian Ashwini Bhaku ji. Let's give him a very big hand. Let's all join hands and give him very big hand. Thank you. He has covered the whole science of handling the emotional wellness, the self-care, our mental health issues, and has touched upon with the real life scenarios and the issues which we are facing in our day-to-day life in very simple
say explanatory mode, and it has gone. I believe that it will help us in taking our life, say progress and happiness to a great height. And for that vibrant session covered by Ashwini Bhakuji, I extend my gratefulness and the hearty thanks to take the time out from his busy schedule and talk to you and shared his wisdom with you all. I am also thankful to the coordinators and the management committee members of Gyan Bharati School who have facilitated this session to reach out to all the teachers who are the nation builders and who are doing a great job of extending, say, imparting education to the students and the children. They are really the nation builders. In fact, we are also organizing a nation builder award program every year wherein we acknowledge the achievement of the teachers fraternity at large, and say for all the participants who have joined this program, I say I extend my thanks to them that by joining they have provided us an opportunity to reach out. In Rotary, we believe about giving something to the community, and under Man Sashakt program, Man Sashakt Yuva program is designed to reach out to the Yuva of the country by developing self improvement, by creating them, sharing them the ideas of individual development and development of the community at large. And in that, I believe that you all the teachers have got a good role, and you can join us to give support to our this mission and reach out to the large number of students and teachers whom you are having in your networking. Thank you all. Thank you. Colonel Saab, back to you. Colonel, Thank you. Colonel Saab, you are muted. हाँ. Thank you very much. अभी समय हो चुका है, अलविदा कहने का मन नहीं है, लेकिन अलविदा तो कहना पड़ेगा। फिर मुलाकात होगी। कलकत्ता तो वैसे भी सभी के लिए ड्रीम होता है, रसोगुल्ला, वहाँ की कलकत्ता की मिठाई, कलकत्ता का कल्चर। और हम तो बहुत लकी थे, कलकत्ता में जो तेघरिया मिलिट्री कैंप है उसको हमने 4 साल कमांड किया है, तो कलकत्ता की कल्चर से मैं भली भांति परिचित हूँ और बहुत अच्छी तरीके से देखा है। तो एक बार फिर से ग्रुप कैप्टन अश्विनी कुमार भाकू जी को धन्यवाद देता हुआ आज जुड़ने के लिए और हम लोगों को स्ट्रेस आउट करने के लिए। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हम अपने को तो एम्पावर करेंगे ही, लेकिन अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी एम्पावर करेंगे, उनको स्ट्रेस आउट कैसे करेंगे। तो आज का टेक हमें यही है कि हम जो कुछ भी आज सीख जो भी समझ पाए हैं, जो लेके जा रहे हैं, उसको अपने तक ही सीमित ना रखें, लोगों तक भी पहुंचाएं। और उसी कड़ी में जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो हम आज शाम तक आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फिर भाकू जी ने ऑलरेडी आपको अपना ईमेल और कांटेक्ट नंबर दिया है। अगर आपके मन में कोई संदेह होता है, कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, जुड़ना चाहें उनसे, तो आप जुड़े। कुछ लोगों को रिकमेंड करना चाहें, उनको भी आप रिकमेंड करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से सबको सब लोगों को नमस्कार करता हुआ मैं इजाजत चाहूंगा। आज के की नोट स्पीकर ग्रुप कैप्टन अश्विनी कुमार भाकू का इस सेशन को
समाप्त करने के लिए, इंड करने के लिए। सो आपकी इजाजत है, बंद करें। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir, Thank you. for Thank you. inviting us Good day. Thank you. regarding these topics. Good day. Good day. Thank you all. Allah. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Bye. Bye.